Classical treatment for linear harmonic oscillator. Let us consider a particle of mass m that moves in 1D space. This is a particle having mass m. This is moving in, suppose, x direction. Okay, and is attracted to the coordinate origin by a force proportional to its displacement. जितनी डिस्प्लेसमेंट इतनी की है, सपोज इसने की है x डिस्प्लेसमेंट, सपोज हम x डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, इसने x डिस्प्लेसमेंट की है तो इसको फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ताकि ये ओरिजिन में वापस अट्रैक्ट हो सके अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या है? F रीस्टोरिंग, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स दिस इज इक्वल टू माइनस KF इंटू एक्स. यहाँ पे जो KF है इसका हम इक्वेशन 1 ले लो, और जो K है KF दिस इज द फोर्स कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, F is equal to ma. ये हमें पता है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लो. ठीक है, यहाँ पे जो m है इट इज मास, दिस इज द मास ऑफ द सिस्टम, एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. अब देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी f है सेकंड इक्वेशन में, और ये भी f है. ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग equation 1 and 2. Left hand side, if the left hand side is equal then right hand side is also equal, so we can write KFX this is equal to MA, and A यहाँ पे क्या है? acceleration, and acceleration is the second derivative of displacement. ये हमको पता है. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे d square x by dt square. Okay, then minus kf x m हम नीचे ले आते हैं, दिस इज इक्वल टू d square x by dt square, और ये किसके इक्वल हो गया हमारा? d square x by dt square प्लस KF x by m इक्वल टू 0. ये हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं. ओके, जो जनरल सॉल्यूशन होता है इस अबव, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसका जो जनरल सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ the above equation is this is equal to x equal to a sin 2 pi nu into t. ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? dx by dt दिस इज इक्वल टू a साइन का हो जाएगा कोस 2 पाई न्यू टी, और इसका करोगे 2 पाई न्यू टी, टी जो है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई न्यू. ओके, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे
डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए तो कॉन्स्टेंट है ऐसा रहेगा, ए तुम्हारा आ गया 2 पाई न्यू, ठीक है, हम ऐसे लिख लेंगे। कोस का क्या आएगा माइनस साइन, माइनस में इधर लगा देती हूँ, माइनस साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। इसका दोबारा करोगे 2 पाई न्यू दोबारा आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटू 2 पाई न्यू। और ये इक्वेशन हुई आपकी माइनस ए 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन 2 पाई न्यू इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ए और साइन 2 पाई न्यू टी, ये किसके इक्वल है, एक्स के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है जी यहाँ तक। और ये जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाती है हमारी 4th, ठीक है जी यहाँ तक। अब आपने करना है इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4 को कंपेयर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4। अब ये तो कहिए हमारी इक्वेशन 3rd है, ये वाली इक्वेशन, यह डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये भी इधर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, यहाँ पे है के एफ बाई एम इंटू एक्स, यहाँ पे है 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू एक्स, बाकी सारी सेम है, खाली जो ये चीज़ है इसको देखो, ये 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ बाई एम के। समझ लगी है, कंपेयर करना है ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करके ये इक्वेशन ये वैल्यू सेम है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू सेम है, ये राइट हैंड साइड हमारे वैसे सेम है, तो रह क्या गया, ये वैल्यू रह गया, यानी कि ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू के एफ बाई एम। तो इसको कर दो आप, के एफ बाई एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपकी जो इसमें न्यू की वैल्यू आ जाएगी, न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू के एफ बाई एम, और न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम अंडर रूट करेंगे 4 पाई ये बाहर आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ के एफ इंटू एम। ये आ गई हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है जी यहाँ तक। उसके बाद है उसके बाद हमने निकाली पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। कैन बी इवेल्युएटेड बाय एफ जो होता है इट इज़ द इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो एफ क्या है यहाँ पे हमारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स है, तो वो है के एफ इंटू एक्स के इक्वल, दिस इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस से माइनस हम कट कर देते हैं, तो एक्स हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई के एफ इंटू डी वी, ठीक है। अब बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई के कॉन्स्टेंट हम बाहर रख देते हैं, हमारे पास क्या रह गया डी वी, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 1 बाई के एफ इंटू वी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वी। तो वी किसकी इक्वल आ गई आपकी, ये आ गया 1 बाई 2 के एफ इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो वी है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट,
ये हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वांटम मैकेनिकल treatment for linear harmonic oscillator. For 1D one-dimensional linear harmonic oscillator, the schrondinger wave equation becomes H psi is equal to E psi, where H is kinetic energy plus potential energy, psi is equal to E psi, and value of kinetic energy is minus h square over 8 pi square into m d square by dx square plus v to psi is equal to E psi. हम ये जो यहाँ पे डी स्केयर बाय डी एक्स स्केयर लिखे, इसको ऐसे डेल स्केयर बाय डेल एक्स स्केयर लिखते हैं और प्लस डेल स्केयर बाय डेल वाई स्केयर लेते हैं जब हम लेते हैं 3 डायमेंशनल में, और जब हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम प्योर डिफरेंशियल लिख सकते हैं। ओके, ये जो इक्वेशन है इसको 1 इक्वेशन मान लो। नेक्स्ट मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली हुई अपना फर्स्ट लेक्चर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पे, उसमें मैंने किया था क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ LHO लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। वहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी फ्रॉम क्लासिकल ट्रीटमेंट we have V equal to 1/2 kx square. Okay, then put this value of V in equation 1, and then we get minus square by 8 pi square m d square by dx square plus 1/2 kx square. Put this in bracket, psi is equal to A psi. This is our second equation. A close examination of above equation show that the above Schrödinger equation is very much similar to the particle in one-dimensional box. Here is only one additional term, that is half kx square. We will solve this equation by the factorization method. For that, first we will define the boundary conditions. The boundary conditions here is that this is one-dimensional box where V is equal to 0 inside the box, and value of x vary from minus infinity to plus infinity. Okay, first we will convert this equation into appropriate form, then we will factorize it. First I am writing this equation in very simple form, 8 pi square m d square dx square. We are taking into x direction, therefore I write here x plus 1/2 kx square into psi x
A into psi x. You can also write this at minus h square by 8 pi square m is h cut by 2m. Okay, we will get the simple equation. Then multiply this equation by minus 2m by h bar square. You can also say h cut square. This is similar. Multiply this equation with minus 2m over h cut square. This will cut out and we are left with into minus 2m over h cut square. Okay, then you will get this equation minus m h cut square kx square psi into x e psi x into minus 2m over h cut square. Okay, then we know that omega is equal to 2 pi nu, and in the first lecture I have find out the equation of this nu from the classical treatment of LHO. This is comes out to be 1 by 2 pi under root k by m. Then put this value of nu into this equation. W equal to 2 pi will cut out and under root km, and we are left with k equal to omega square into m. Put this value of k into this equation. Into this one equation. Here you will put the value of k and we will get d square psi x or dx square minus omega h cut square omega square m into kx square psi x ex multiply minus 2m h cut square. Then d square del square psi x over del x square minus multiply it with m into m square h cut square omega square into x square psi x into minus 2m by h cut square. Okay, then divide this equation and multiply this equation by h cut by mw. When you multiply this equation by h cut by mw, we are left with h cut by mw d square by psi x into dx square minus m omega over h cut into x square psi x is equal to e psi minus 2m multiply minus 2m h cut square. Now put the value of m omega h cut into x square equal to y square. When you put this value here, then we will get this equation. H cut m omega del square psi over del x square minus y square psi equal to minus 2e h cut omega into psi. Then for the solution of above equation, we can write this identity as ddx into d psi over dx. Okay, then again we can write ddx into d psi over dy into dy over dx. Okay, here we put y equal to this one m omega or h cut under root into x. Then put if we differentiate this equation dy by dx
this will remain same, m omega by h cut 1 by 2, and dx by dx become 1, and we are left with this equation. Take dy by dx is equal to a over h cut 1 by 2, and a square equal to m omega by h cut. Okay, here we have d dx into d psi over dy into dy by dx. Then dy by dx, what we have put? This is equal to a. Put the value of dy by dx here, a. Then again by opening this differential into dy by dx into d psi by dy into a. This is again equal to a. A into a is a square, and we are left here with dy into a square, and this equation becomes del d square psi over dy square into a square. Okay, then put the value here. A is what? A square is what? M omega over h cut. Put this value of d square psi over dx square into this equation, wow equation. H cut over m omega, this is equal to d square psi over dy square into m omega over h cut minus y square psi equal to minus 2e psi over h cut into omega. Then by cutting this, we will get d square psi over dy square minus y square psi minus 2e psi over h bar omega. And then by taking psi common, we are left with this equation, and we can also put d square by dy square minus y square psi equal to minus lambda into psi. This equation can be easily factorized. Next is the factorization. Method. To factorize the above equation, we will take two operators, operator a plus and simply operator a. Here a plus operator is the step up operator and a is the step down operator. Let's solve. Here a plus operator is equal to d over dy minus y, and a operator is dy plus y. Let's solve this. First put this value, d by dy minus y, d by dy plus y into psi. Okay, d by dy minus y
if we insert psi into the bracket, we will get this equation into y psi. Then multiply this bracket with this bracket and we will get dy first with this d psi by dy, then the dy of y into psi, then with this minus y d psi by dy and minus y square psi. Then multiply this d square psi over dy square plus, here we have dy of product of two values y into psi, and differential of this type of product can be solved like that. First value, differential of second value plus second value, differential of first value, minus y d psi by dy minus y square psi. Now look at this. This is plus y d psi by dy and this is minus y d psi by dy. This will cut out. Dy is 1 and we are left with d square by square psi into dy square plus psi minus y square psi. And we can write this equation as dy square minus y square psi plus psi and equal to d square by dy square minus y square into psi plus psi. And as we have written here above, d square psi dy square minus y square, this is equal to minus lambda, and put this value here. This is equal to minus lambda and we have this equation, and we are left with take psi common from here, this become minus 1 plus into psi, or it can be written as, if we take minus common, lambda minus 1 into psi, or 1 minus lambda into psi, same thing. Okay, similarly we will solve another by when step down operator operating on step up operator. Similarly we will solve this equation too. Similarly dy of, we multiply with this, we are getting del psi plus y to del psi by del y, when it multiply with it, minus y square psi. And similarly
dy square. Similarly, as we solved earlier, y d psi by dy minus psi plus y d psi by dy minus y square psi. This will get cancelled. I am directly writing the answer. And we are left with, I am directly writing here answer, minus lambda plus 1 psi. You can solve it as above. Next, the commutations of these operators by multiplying this is this psi, we get this equation. And put this value of a plus a operator. This is equal to minus 1 minus lambda into psi, and similarly this one is equal to minus lambda plus 1 into psi. Minus minus become plus lambda plus 1 into psi. Then by opening this bracket, they will cut out, and here we are left with 2 psi. Now we can say that when these operators commute with each other, the factor will increase by 2. By this commutation rule, we have find out on operating by step down or step up operator, the value of lambda changes by factor 2. We can simply write as this equation, lambda minus 1 changes by factor 2v, and we can take this lambda as lambda minimum, and lambda minimum comes out to be 2v plus 1. Here v is our vibrational quantum number, and its value is v is equal to 0, 1, 2, 3. If value we put here v is equal to 0, lambda minimum comes out to be 1. When we put 1, then lambda minimum will comes out to be 3. It changes by factor 2. Okay. From equation 1, we have also find out value of lambda as E h cut omega. Earlier we have solved this equation in our first video. Then lambda is equal to 2v plus 1. Here E comes out to be 2v plus 1 h cut omega by 2. 2v plus 1 h cut omega is 2 pi nu by
2 and put the value of nu here 2v plus 1. We have solved all these values earlier. 2 pi nu is here is 2 nu is 1 by 2 pi under root k by m, and here we are left with 2v plus 1 h cut 1 by 2 under root k by m. Or this value can also be written as if we take 2 here, v plus 1 by 2 h cut under root k by m. This is the value of vibrational energy in case of linear harmonic oscillator. This is very significant result because it tells that the energy of a system described by a harmonic oscillator potential cannot have zero value. As we put value of V is equal to 0 for ground state, for 0 point energy, find out the 0 point energy, we will never have zero value. We left with h cut under root k by m. This is the 0 point energy in case of linear harmonic oscillator. And one more point, the difference between two successive states, we find the difference between two successive states. Let's see, En plus 1 minus En. Here n we take equal to 0 and this becomes E1 minus E0. Then put value here, 1 plus 1 by 2 is 3 by 2, h cut we will take under root k by m as common, and E0 will comes out to be 1 by 2 h cut. And by solving this equation we are left with h cut under root k by m. We will never have zero value, and the difference between two successive states is always same, h cut under root k by m, always same. Thank you for watching. Subscribe my channel and like my video also. Thank you.